अभय मंगलदास एक नाम का प्रिजनर है. I need to make a building like IKEA, where it's flat pack. This is something novel. This is not being done. इसको मॉड्यूलैरिटी बोलते हैं कि एक ही चीज कहीं भी चले. ये रूम का दरवाजा आप दूसरी जगह लगा दो, सेम रहेगा. तो ये चीज हमारी एक 300 साल पुरानी हवेली में है. Amazon, Airbnb और ये सब लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया है in prefab homes. I often think about it that is it because I am privileged? You cannot deny that I am privileged. So for a privileged person, one can have time to think all this. Our buildings should become very lightweight and they should disappear in nature. When you build, normally you build for yourself because you want to inhabit. Yeah. So what we are trying to say, don't inhabit, cohabit. हमारी जो स्कूल है वो भी निश है, हमारा होटल है वो भी निश है, हमारा आर्किटेक्चर है वो भी निश है और हम भी निश है. My grandmother didn't flow with the current. She knew this was the right thing. They started this school in 1947. It has been with the same pedagogy, which was considered bizarre. If what you do gives you a solution to a problem, then you are a designer. Otherwise, you are a just aesthetics. Steve Jobs ने क्या किया? उसने बटन निकाल दिए फोन में से. अभी किसने सोचा था कि बटन वाला फोन चलेगा? लेकिन उसने क्या बोला कि बटन की जरूरत ही नहीं है, मैं बटन क्यों रखूं? जो यूजर को मालूम ही नहीं था कि मुझे बटन नहीं चाहिए, उसने बोला कि नहीं चाहिए. तो he was the greatest designer. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज का हेरिटेज क्या होगा जो कल वाले लोग बोलेंगे कि ये हेरिटेज. I like to do things which nobody has done. That is my driving force. Namaste sir, welcome to Level Up with Anona. Super excited to host you. I mean और जो ये हमारी शिल्पकार सीरीज़ है, वो बोलते हैं ना, शिल्पकार एक ऐसा इंसान होता है जो एक आइडिया को एक मूर्ति में या जो भी उनकी आइडियोलॉजी उसको एक्चुअली दर्शाता है, उसमें कन्वर्ट करता है. एंड आप ऑफ कोर्स मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं सर जिसने अपने हेरिटेज को इतनी बखूबी, मतलब पूरे इंडिया स्टेट की बात नहीं कर सकती, नेशन वाइड आपने सामने रखा है. सो दैट्स अमेजिंग. एंड नॉट जस्ट हेरिटेज, मतलब ट्रेडिशन इज़ वन थिंग, बट टेक्नोलॉजी को लेके आपने इतनी चीज़ें करी है, एजुकेशन को लेके आपने इतनी चीज़ें करी है. तो आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड टू लर्न सो मच फ्रॉम यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. सो मेरा पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बिकॉज यू कम फ्रॉम सच अ प्रोमिनेंट फैमिली, बट आपसे अगर मैं पूछूँ अभय मंगलदास कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? पहले तो बिकॉज ऑफ द लास्ट नेम which is known in Ahmedabad, being amongst the first mill owners, there is a certain pressure. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अभय मंगलदास एक ये नाम का प्रिजनर है. एक तरीके से क्योंकि उम्मीदें होती है ना, तो उस तरीके से एक प्रेशर के अंदर है. था शुरुआत ऐसे हुई जरूर, क्योंकि लगा कि the business is gone, because by the time I was an adult, the business had more or less disappeared, you know. Like in many of the textile mill owner businesses, the families, they, for whatever reason, they didn't manage to continue their business after the second or the third generation. Right. So I was the fourth generation. Right. So by my time, it was almost coming to an end. So if you ask me the question, I started off being this person under a lot of pressure, and then the journey began. And now I suppose Abhay Mangaldas is a person who is deeply connected with whatever has been put in his custody, because I consider myself a custodian of whatever tangible assets that the family has accumulated or kept, you know. Right. So I consider it a great privilege to be in that position now. बट आप जहाँ पर है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट उसमें हो सकता है, बट आप जहाँ पर है आप फील करते हो कि यू हैव डन योर पार्ट, लाइक यू आर सक्सेसफुल नाउ? No, not at all. I mean, I feel more confident, but there is miles to go. बट टेल अस योर, जब आपने ये सोचा कि मैं अपनी कल्चरल प्रॉपर्टी, मैं अपनी होम प्रॉपर्टी को एक पूरा हेरिटेज एक होटल में चेंज करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में क्या था, कि क्या आइडिया था कि दिस इज़ द थिंग दैट आई वांट टू बिल्ड? नहीं, ऐसा नहीं था आइडिया.
ओरिजिनली हमारे पास सारा बिल्डिंग था ही नहीं. व्हेन माय फैमिली bought the property from the rest of the family members, because we were a large family and this is a jointly held property. We just had a portion of the building in our possession, which was a terrace parking lot and few rooms in the building. Right. So when we started, I didn't really know exactly what we'll end up with. But it was an organic exercise. Then we got some more space, then we added some rooms. First we added the restaurants, then we added some rooms, then we added some conference space, and so on and so forth. It continued like that. We added retail space. फिर लगा कि ये सारा अगर this was one part of the building, but the building has my great grand uncle's portion is also there. So if we acquire that, then it can become like a proper full service hotel. Right. So till about from 1995 till 2004, it was a very organic journey. After 2004, we were clear that we would like to have a proper hotel. And of course, worldwide, restoration has been sustained through hospitality. So it's not surprising that we came to this conclusion. And it was eventually a home at the end of the day. Right. So you couldn't possibly convert a home into some shopping center or something. Of course. You had to convert it and keep it like a home. And a hotel, so now we say a hotel which feels like home, you know. So you had all the knowledge about how do you want to build and you know the architecture and the interiors and everything, or you studied gradually? No, my father is an architect and our family is highly exposed to design and crafts. So it wasn't that complicated, and I live in a house which is also from the same time. So in a sense, this house was an extension of how I lived my own lifestyle. Wow. So it's an interesting thing that the journey of the last 1925 to almost 30 years has been a journey of self-discovery. Wow. Because whatever I like, how my life changes, then it reflects on what I do here, because the restoration continued for a long time. And we bought other Havelis also. So each of them reflects my lifestyle at that time. And even today, whatever else I do, like the new projects we are doing are high tech. So I'm now more interested in that than what this is. So it's whatever work you do goes parallel with how you evolve as a person. How you evolve. Yes. हाँ, that's what मतलब आपने ट्रेडिशनल से एकदम जो ये जर्नी लिए टूवर्ड्स बाकी मतलब इट्स लाइक एन एक्सेप्शनल आर्किटेक्चर. सो आपने वो सीधा टेक्नोलॉजी एंड एआई पे लेके आए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो नीड क्यों लगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो बिल्डिंग होती है उससे आपने ये टर्न लिया. सो व्हाई डिड यू थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट एंड द नीड ऑफ द आवर? दो वजह थी. वन इज दैट आई लव बिल्डिंग and we have a team, and the second is I don't like the way buildings are built. Why is that? Because building industry is one of the few or the last businesses where the entire factory is taken to the site. Each building becomes a factory site. Right. Now this doesn't make sense. It's highly inefficient. And you're dependent on the weather, on the craftsperson, the mood of the person. Right. So there's no control. Right. Makes So sense. why can't a building be part of a factory process? Because all the materials are available. So I said, let me create all the parts. First, strip down the building to what it is. And then put each part, replace each conventional part with a new factory built part. Right. So, I mean, again, this is not something that's not been done in the West, but we do drywall construction, we do metal, we replace concrete with metal, then we replace cement precast, but lightweight members. So Okay. this is becoming gradually very popular in the West, but in India, for whatever reason, it has not taken off. It is not yet. Yeah, not yet taken off, but it will 100% take off because it makes so much sense, because everything is done in a controlled environment. So coming back to your question about why I wanted to do the three buildings, Baki is just one of them. We are doing multiple buildings, but each one was क्या बोलते हैं कि एक once you enter
a door, then more doors Yeah, open. yeah. ऐसे होता है, it's not planned. So first we had a requirement that I needed to make a building on top of a hill in Alibag. अच्छा. And then I said that if I want to make a building on top of a hill, then all the material has to go up, and therefore we have to make a road. And to make a road, we have to cut the trees because it's a winding road, and we have to take a truck up, and then I'll pour cement. It just didn't feel right because it's a beautiful forested land. So why don't I do a prefab building? And so I was looking at prefab buildings across the world, which I could perhaps put there, like container homes. Yeah. Container homes are the only ones that are known in India, but now there are many types of prefab buildings. But I also looked at container home. But for container home also you have to need a truck to take the container up, no? Makes And you need a sense. crane to put it in place. Yeah. So then I said I need to make a building like IKEA, where Okay. it's flat pack. And you can Okay. take each part up and then assemble it together. Now this is something novel. This has not been done. Normally you get a building, prefab buildings are pre-built in the factory and the whole building is put on a truck and then it's put on the site. So 95% of prefab buildings, if you search on Google or see on Instagram, they'll be all buildings which are actually assembled in the factory, then loaded onto a truck, and then they go to the site, they are unloaded onto the site, and then they are ready to Got it. move in. Right. Whereas our buildings are a kit of parts, which is very unique. So it's actually like an IKEA kit of parts, Wow. which you put together. Wow. So this required some research and development, and so one building was happening there that was taking too long, but I was learning a lot. So and in the meanwhile I had done an experiment very long ago with Indian masters artists, and these paintings were lying with me, and the whole journey that I had done with them was very well documented, and I said I should actually exhibit this because it's important transition in Indian contemporary art. So, and we had all the top artists, the so-called progressive group. I don't know if you're familiar with Indian art, but there was a progressive artist group, Okay. which started in the 50s, which was a group which broke away from the old Bengal school. Okay. Earlier, the Bengal school and all was the traditional, or of course, the miniature paintings that you see in Rajasthan. But this was a different group which tried, they all lived in France and they went abroad and they tried to bring the contemporary movement into India. Right. So this was called the Progressive Artist Group. And they were doing interesting work and their paintings were fetching good prices. And then we did this experiment where we introduced them to technology. Okay. Way back in 91, 92. Huh. And they all worked in our with technology with an Apple computer Okay. and created paintings on the computer using like a Photoshop, but of that time. I'm talking about 92 Photoshop, which was very primitive. Exactly. So they used Photoshop kind of thing and created paintings using multimedia scans and photographs, and they put it all together, and then they created an image which we stored in a hard disk. And then hard disk we said now we need to exhibit. So how do we exhibit? One was of course to exhibit it on screens, but then we wouldn't be able to sell it. And at that time nobody had anything about digital art and all, nothing exists. So anyway, that's a different story, but essentially we ended up making them into monoprints. Monoprints are where you only make one copy of an image. Acha. And it was done analog, it was not digital, because that time digital printers were very small and our images are huge, 6 feet by. So we went to a place in England which we identified where they did backdrops for theatres. This was around which year? This was in late 90s. Okay. Eventually we had these amazing paintings which were single prints, analog prints on archival quality canvas with archival quality inks, and the artist decided that they wanted to paint something on top also to kind of give it whatever, and they signed it, and they put a certificate saying that this is the only image of my work, because people would be concerned, no, that computer pe to copies hogi. Exactly. So they made all that. And we did a big show in Museum of Modern Art in Delhi, in Jahangir Art Gallery in Mumbai, in Chennai, and then we sold a few paintings, and then I had a few left. And in the interim, we did a lot of experiments because this was on canvas, but we were doing a lot of other experiments like painting with light.
I mean, you can paint with lights, different colored lights on a negative. Like this camera, I can just do something and it will catch the image, you Oh, know. wow. I mean, Okay. I'm talking about a silver bromide. Now got they are it. digital, but on a silver bromide, the shutter is open, you can paint on a film. So Hussain did some painting on film with different colored lights. We did, with Hussain, we did screen prints using his photographs. And each print would be different color because in screen printing, you can keep changing the color, you know. And then we had a textile mill at that time. So there was a long printing table. Okay. You know, in mills, have you ever been to a mill? Now they're closed. But textile mill had long printing tables. I've seen in pictures. On which yeah. some of the cloth was screen printed. Because all the cloth was not machine printed. So we had this thing and Hussain, and I told Hussain, look, Hussain Sahab, let's go here. We'll do images of yours in different colors in a long table. And then you come with a brush and your easel and just paint on top because he was very fast. So each will become an original. Exactly. Because each is an original. Yeah. और उस color भी अलग है. और this was done by Andy Warhol. So this was inspired by Warhol. So we did that. And so these kind of fun experiments we did. They were sitting with us in the archives. So I said, let me put up, I need to have a building to show this. Yeah. So why don't I do a building also using technology? And that's how Bucky came about. So my brief to Jwalant, the artist, the architect who eventually did this, was to make a gallery which could fit in a container and could be transported somewhere. Wow. And That's so so he nice. created this Bucky. It's called Bucky because of Buckminster Fuller. Now many people don't know about Buckminster Fuller, but Buckminster Fuller was a great philosopher and conservationist, and he created a geodesic dome. A geodesic dome is again, I mean, I'm throwing all these technical terms, but they are very interesting. But it's very interesting, Geodesic domes are made using a cell. You know, our body is made up of a cell. Multiple cells make the body. Each cell looks more or less the same. It does look the same. Yeah. So similarly, a building is also made out of a cell, and it's a triangle. So if you see a Bucky dome, it's dome made out of triangles, and triangle is a very strong geometric shape. Okay. So he wanted to cover entire New York using this without any support structure, because it's self-supporting. Yeah. So that was very inspiring, and he had made a dome in Ahmedabad for my uncle. Acha. Okay. It was called the Calico Dome. Okay. And the Calico Dome was used as a moving shop for Calico. Calico was a mill. Okay. So they used to go with the Calico Dome to different places, put up the dome, and do fashion show under it and have a store. So I was familiar with it, and then I said, this is great, you can actually move around with it, you know. And then eventually that Calico Dome was put up in Relief Road, where the Calico mill shop used to be. And then it collapsed, and then the Municipal Corporation is trying to revive it. It's still there because it was an amazing heritage structure. But anyway, that's again another story. Yeah. So this way, the journey of old experiences with what one can do now, with the knowledge of this, so we went on to modular architecture. Modular architecture is architecture where you work with modules. Why do you need to make a window every time? Window can be made a fixed size and kept, no? Why do you need to make a door every time? Why do you need to make a column every time? Why do you need to make a bracket every time? Different one. The size can be fixed. You can do any design. तो ये इसको मॉड्यूलैरिटी बोलते हैं कि एक ही चीज़ कहीं भी चले. ठीक है. तो ये रूम का दरवाज़ा आप दूसरी जगह लगा दो, सेम रहेगा. तो ये चीज़ हमारी हवेली में है. हमारी एक 300 साल पुरानी हवेली, मंगलदासनी हवेली 1. There, I mean, I again saw it, so I knew it could work. All the columns, all the brackets, all the beams, all the windows, all the doors are the same. And they're mass produced. And then the Haveli is actually put together, which is again a kit of parts, no, what I was talking about. So it's essentially the same thing. So I said, okay, I don't want to do it with wood, I'll do it with metal and the contemporary machine-made material. And my goal is that, let's say you want to build a small house. And why do you want to go to an architect and an engineer and an
electrical consultant, an AC consultant, and a civil site, whatever. So many people you have to go to, and then the site somebody goes, and it takes years to put something together. Exactly. तो इसकी जगह आपको हम कंप्यूटर पे 10, 15, 20 डिज़ाइन बता दे, आप सिलेक्ट कर लो, फिर इंटीरियर जो करना है करो, आपका हो जाएगा 3 महीने में तैयार. ये एक हो रहा है अभी सब जगह. उसमें 3D प्रिंटेड भी करते हैं वगैरह, अगर अलग अलग तरीके से बिल्डिंग कर रहे हैं. और अमेज़ॉन और एयरबीएनबी और ये सब लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया है in prefab homes. Oh wow, okay. Because they understand that there is a huge housing crisis across the world, and the way we are building will never finish. So prefab companies, startups are coming up fast, but in India we are amongst the first who are a prefab startup. So you plan to do it for others also in future? Yes, yes. So this, we have put in so much effort, and we have so much intellectual property because of the last 5-7 years of effort. That just at the moment we are doing our own buildings because we have a lot of requirement in the foundation or whatever. But eventually I want to do it for others because I think in hospitality ideally, because see, my fundamental interest is in, I run a foundation, educational foundation. So, and I've grown up being given the sanskar that anything that you find in your life, you come across many situations where you encounter a person or a situation or a place. When you leave that place, don't leave footprints behind, and leave that place better than you found it in some way. अगर आप इंटरव्यू के बाद बोलेंगे कि ये तो त्रास हो गया, आई एम होपिंग दैट आपको लगेगा अच्छा रहा. You know, you will have a pleasant memory about our meeting, and so would I. So that if everybody thinks like that, then you are a good person, you know. So essentially, it's a simple way of explaining what education can be, but essentially you want to not bother anybody or disturb anything in you because of you. But in the way that we live, we are disturbing everything, especially nature. True. And our neighbor to forget. True. So, True. So, because of that, I want to build like that. And I want to build especially in remote locations. आपने परसों पढ़ा, Nicobar, they are cutting 30 lakh trees. Yes. Now, what is this? Now, no wonder, I mean, it's an economic balance everybody is playing with. You say, Acha, is it better to cut the trees and feed the people, or do you want to let them remain primitive, so to speak? So this whole tension between development, what is development, and the balancing of nature. What is success? What is development and what is success are two terms for which there are very contradicting answers. But isn't it too difficult for you then to find an answer for this? Because no, it's not at all. Everybody is going through the same, no, process. It's not at all difficult for me. And I often think about it, that is it because I'm privileged? See, you cannot deny that I'm privileged. So for a privileged person, one can have time to think all this. If you're looking for your roti kapda, then it's more difficult to worry about trees, you know. So, but people do. Our farmers and our Adivasis worry about them the most. Even they don't have roti kapda. Or they have minimal. But our desire to accumulate has become so overpowering that, and all our effort and all success is defined by what you have accumulated. Isn't it? Yeah, true. It's not defined by what kind of a person you are, but what you have accumulated. What was the journey, वो थोड़ा भूल जाते हैं लोग, and they focus on what you finally built. हाँ, और brand ये वो वगैरह सब उसके पे चल गया है. So House of MG में कोई brand ही नहीं है. अब देखना, आपको कहीं भी कुछ भी brand नहीं दिखेगा. तो हमने जो AC है उसको भी cover कर दिया है कि कौन सा AC है मत देखो. तो our whole effort is not to focus on the brand because it's irrelevant. What is important is the functionality and the functionality of the space. So even in architecture, I feel it's irrelevant. We even want our buildings, our new buildings, which are called Darwin, Live Light. Our buildings should become very lightweight and they should disappear in nature. How I mean is that when you build, normally you build for yourself.
because you want to inhabit. Yeah. So what we are trying to say is don't inhabit, cohabit. So अपना बिल्डिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रकृति को भी आप समावेश कीजिए, उसको भी आप जगह दीजिए कि वो बिल्डिंग के आसपास चली जाए, उसके ऊपर आ जाए और यू लिव विथ नेचर. नाउ ये भी एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है और बोलेंगे कि नहीं मुझे तो लिजर्ड नहीं पसंद है, मुझे तो कॉकरोच नहीं है. कॉकरोच तो ठीक है, गंदगी होती है, लेकिन आई डोंट लाइक अ स्पाइडर और आई डोंट लाइक अ स्नेक. बट सी दैट्स अगेन एन एटीट्यूड. इट्स एन एटीट्यूड. सो in each of us have to make our own choice. But I think that the way of living of the past, of the villagers and of the Adivasis was really very coherent and respectful of nature also. Yeah. So when I said that you leave it better than you find it, I meant also nature, not only human beings. Yeah, makes so sense. Therefore I would like to move on a journey where my own lifestyle becomes more and more in tune with what I believe in, but sometimes unable to fully practice. I still come by car and I travel by plane and वो होता रहता है, लेकिन वो बैलेंस ढूंढने का है कहीं. बट ये जो सर आपका आई मीन आई कैन सी आप जितनी चीज़ें में यू आर अ एक्सप्लोरर, यू नो, बिकॉज यू हैव अ थॉट प्रोसेस एंड यू आर नॉट fearful about it कि मुझे उस चीज़ को कैसे प्रैक्टिकली लेना है. सो आपका एक थॉट प्रोसेस है और आप उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करते भी हो, पर उसमें कभी आपको, क्योंकि लोगों को दिखता है कि यार ही इज़ डूइंग दिस एंड लाइक यू मेंशन कि हाँ सोचते हैं यार प्रिविलेज्ड है एंड यू कैन थिंक अबाउट इट एंड ऑल ऑफ दैट, बट उसके पीछे वो एक फेलियर का जो फियर होता है वो भी आई एम श्योर रहता होगा. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? रहता है आपके मन में? अभी नहीं रहता है, क्योंकि पहले बहुत था. हाँ. जो मैंने शुरुआत की थी तब मैंने बताया ना एक प्रेशर था. हाँ. अब भी नहीं रहता है क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंस है और एक्सपीरियंस है कि जो करेंगे और जो अनुभव से करेंगे उसमें इतनी सोच होगी कि वो खुद डीप होगा. फिर वो दूसरे लोग को एक्सेप्ट करने में जरूर टाइम लगेगा, नो क्वेश्चन. Why I'm asking this sir is because this only कि सक्सेस के और के बीच का जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस वो जो पाथ होता है वो यही होता है कि यू हैव टू गेट इट डन. आपको करनी है वो चीज़, जो थॉट को वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल कर एक्सपीरियंस में चेंज करने, और आपने वो किया है. देन ओनली यू आर लाइक कि अब नहीं डरता मैं. नहीं, माने आपका जो सवाल था कि वो जो सोच है, जो अलग सी सोच है. हाँ. मैंने जैसे बोला इनहैबिटिंग वर्सेस कोहैबिटिंग. अभी yes. बोलेंगे मैं कोई को बताऊंगा कि हमारा कुछ, आप कहीं रिसोर्ट में जाएंगे, वहाँ इतना सारा नेचर होगा कि आपको सांप भी मिलेंगे और आपको स्पाइडर्स भी मिलेंगे और आपको लिजर्ड्स भी मिलेंगे, ऐसा बोलूं तो शायद वो बोले कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं जाना है. हाँ. लेकिन ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे हाँ मुझे जाना है. तो ये जो ऐसे लोग हैं ना वो निश बोलते हैं इसको. सो हमारा, मैं जो भी काम करता हूँ, हमारी जो स्कूल है वो भी निश है, हमारा होटल है वो भी निश है, हमारा आर्किटेक्चर है वो भी निश है, और हम भी निश. माने हम निश क्यों है? क्योंकि हमारी सोच, सब ऐसे सोचते इसलिए हम सोचे ऐसी नहीं है. हमारी सोच खुद की सोच है. जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग बोलते हैं ना, इट्स अ इंडिपेंडेंट वे ऑफ थिंकिंग which again is possible because of certain type of education and certain self-confidence which comes over time and of extensive travels. I think if people travel a lot and they see and then they accumulate, then there is an understanding of what. मैं आपको ही सवाल पूछूं कि आपका कन्विक्शन क्या है, मुझे बताओ, तो आप थोड़ा हैरान हो जाएंगी. मेरे कन्विक्शन क्या है, मेरा कन्विक्शन. और आप लिखने के लिए ये सवाल आपके लिसनर्स को भी पूछो कि आपका कन्विक्शन लिखो. आपके 3 कन्विक्शन लिखो जो आपकी इतने स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि जो आप जो भी करते हैं उसमें आप फॉलो करते हैं. तो मुश्किल रहेगा. या. सब में ग्रे रहता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहता, और मेरे में भी है. लेकिन मेरी कोशिश हर तरफ ऑन द डार्कर और रादर द वाइट पे होती है. डार्कर शेड ऑफ ग्रे नहीं होता है लाइफ में. मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता हूँ कि आई एम ऑल वाइट. नो, आई हैव compromises. Life is about doing certain compromises. And in society you cannot live without doing them also. If you can't be a Gandhiji, I mean, it's not possible. Even Gandhi made compromises. Yeah. But essentially
Gandhiji came and stayed here, in House of It. Yes, yes, yes. So Gandhi is very much prevalent everywhere. If you go to Kochrab Ashram, there are the vows you take. There are some vows there are 7 or 8 vows that every ashramite had to take. Now, every vow I go in front of, I have to photograph them and putting them somewhere. Each vow was so difficult to follow that I said, my God, if he followed all 7, then he's totally white. But he was not. We know that. We know that. Yeah. So I think life journey is moving from the gross to the subtle. तो ग्रोस किसको बोलते हैं? जहाँ आप यूं ही करो भी, वो भी करो, जो भी कन्वीनियंट है वो करो, इसको ग्रोस बोलते हैं. I mean, it's a way of saying कि you do as per the circumstances, you flow with the current. चल रहा है जो चल रहा है. हाँ, बिगड़े टुगड़े आपको कोई परवाह. And subtle is when you have an independent way of thinking and you say, नहीं, I want to move like this. Regardless of where the flow is going, I will try and move like this. If it's against the flow, then I'll resist it. If it's giving me some tailwinds, good and well and good. But don't you think, sir, that's the most difficult part of life? I mean, वो सीख गए लोग तो I think आधी life खुद ही इतनी easy हो जाएगी to just have the control and emotions and जो तुम्हें चाहिए, you have planned something out and you work according to that. I think 90% people, they go with the flow wala situation. So don't you think that gets really difficult? Why is it difficult? It's difficult only if you are not convinced. If you are convinced you want to be vegetarian, why is it difficult to be vegetarian? Makes sense. It's all here. Makes sense. तो आप जो करेंगे आपको मालूम है कि आपके लिए अच्छा है, आपके सोल के लिए अच्छा है, आपकी रात की नींद के लिए अच्छा है, Makes sense. आपके शरीर के लिए अच्छा है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है. Then you do give up something technically, but you don't feel you are giving up. A Then it vegetarian makes person sense. doesn't feel he's giving up meat, no? Yeah. Then everything makes sense हाँ, because they are smoker will convinced. gives up smoking, माने he may think, oh my God, but if you decide that I don't like smoking, I mean it's not good for me, then you know it's not difficult. Yeah, मैं आपका सर childhood पे जाना चाहूँगी because you have grown up with such intellectual people around you. आपका childhood कैसा रहा? What you'll have to say about that? मेरा childhood अच्छा रहा. I went to a school which was Shreyas Foundation. Yeah. Which was a experimental school, and which meant that children were allowed to do what they wanted to do. The school didn't decide what the children should do, but you could do what you wanted to do. It's still the same. We try to follow it. We've grown a lot, so it's a little difficult, but we do try and keep it child focused. We won't force a child to only do what the rest of the children are doing. The child can decide. ये ऐसे मुश्किल नहीं है, लेकिन जो कार्यकर है, जो हम टीचर को कार्यकर बोलते हैं, फैसिलिटेटर. Okay. टीचर तो नहीं होता है, वो फैसिलिटेटर होता है. Wow. तो वो फैसिलिटेटर के लिए ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 35 किड्स को खुद को जो करना है वो करना, तो केओस हो सकता है. तो लेकिन कोशिश है. कभी भी श्रेयस के बारे में कुछ करेंगे तब देखेंगे, लेकिन अजीब सी जगह है. तो हमारा चाइल्डहुड वहाँ रहा, और मॉन्टेसरी मेथड थी, और एग्ज़ाम्स के प्रेशर नहीं था. मॉन्टेसरी मेथड क्या होता है सर, एक बार आप? मॉन्टेसरी मेथड, एक मैडम मॉन्टेसरी करके इटालियन लेडी थी. उन्होंने एक सारा एजुकेशनल पेडागोजी बनाया, जिसके अंदर सिखाने का तरीका, पेडागोजी क्या होता है? सिखाने का तरीका. सीखना एक ही चीज़ है. अगर आपको ABCDEFG सीखना है तो सीखना तो ABCDEFG है, लेकिन कैसे सिखाना, इसको पेडागोजी बोलते हैं. तो मॉन्टेसरी इज अ पेडागोजी. और कलर, टच, स्पीच, ये सब इज पार्ट ऑफ लर्निंग. All the 5 senses. All the 5 senses are part of learning. Okay. So Montessori method is a method which teaches you the same skills. Literacy. You start with literacy because you are a kid, in early years it's literacy.
and learning your motor skills and all those things that in early years of your school are taught in a certain way in other schools or through a book very often, which is ridiculous for a little Yeah. kid, you know. Here we are, it's mostly experiential, it's child focused, so a child is not forced to do something. Yeah. It is mixed age group, which is very unusual. Wow, okay. So different age groups, and then there is peer learning. So mixed age group means peer learning. आपने अगर ऑलरेडी सीनियर केजी कर लिया है और अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में आई, तो आपके साथ सीनियर केजी वाला लड़का होगा, माने चाइल्ड विल बी देयर. सो द फर्स्ट स्टैंडर्ड person has already done what the senior KG has done, so he'll be able to teach the senior KG person. Wow, that's so good. And the senior KG person will also learn the first. 2 साल का रिवीजन हो जाता है और वो एक दूसरे से सीखते हैं, जिसमें ज़्यादा मजा आता है. Even I saw cooking and stitching, everything is being So taught. that is part of the experiential learning. Wow, that's. और चाइल्ड फोकस क्या होता है कि इफ़ आपके क्लास में आपको कभी स्विमिंग पूल पे पास ले ही नहीं गए, कि आपको कभी एनिमल्स के पास ले ही नहीं गए, तो आपके पास एनिमल्स के लिए क्या एम्पैथी होगी, सिंपैथी होगी, या तो कुछ अट्रैक्शन, राइडिंग करना है आपको, फार्मिंग करना है, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको पसंद है फार्मिंग, कि आपको कुकिंग करना है? अगर आपने किया ही नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो मॉन्टेसरी स्कूल्स में एक्सपीरियंस हम सब चीज़ का करवाते हैं कि आप ये करो, आप वो करो, आप वो करो, और जिसमें आपको जो भी पसंद है वो आप फिर फॉलो कर सकते हैं. That's so nice. तो ऐसी स्कूल में पढ़ने से हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि नहीं आपको डॉक्टर, लॉयर ये बनना है, ऐसा कुछ नहीं था. जो करना है करो और जैसी सोच वो करो, कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है. अमाने दूसरे को पीड़ा देना बुरा होगा, लेकिन आपको जो करना है करो. Nice. तो Okay. ऐसे माहौल में हम बड़े हुए, इसलिए हमारी सोच दे ऑलवेज एनकरेज इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बिकॉज यू डिडंट हैव टू बी लाइक समबडी एल्स. So when you were that young, आपने सोचा था मैं ये बनना चाहता हूँ? नहीं, मैंने पहले से सोचा था कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना. हाँ. पहले से था ये, वो तो है. You started very young ना? हाँ. Yeah. मुझे बिजनेस करना है, वो आई वाज वेरी मच aware of, because I always felt this thing that my family always had so much business, but now it's going down and I should do something. Yeah. So अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे आपकी लाइफ का strongest support कौन रहा है? I think my family has been very supportive, but not supportive in giving me money, but supportive money never came in the way. Very often support is also something where you don't oppose, then also is a support, it's a passive support. Makes sense. So it was a passive support, it was not as if it was active support. Of course my father is an architect and he helped me, Yeah. but they never came in the way of whatever we wanted to do. So I think that is unusual, no? Being a girl, I suppose for you it must be sometimes a challenge. Yeah. Maybe not for you, but for most ladies नहीं, it is a happens, challenge. of course. Yeah. It's At a times, challenge. yes. मतलब I think things have still not changed, so sometimes it happens, of course. So expectations were not imposed on us. I think that was a great privilege of not having burden of our parental expectations. And what do you think about, because we spoke about Shreyash Foundation, so what do you think, sir, जो education अभी एक system चला आ रहा है, so एक like you mentioned experiential learning है, and एक अभी still lot of people go towards the textbook learning जो चल रही है, so how is the कितना percentage है, what do you think, how is the education system doing right now, and what's the percentage that people are moving towards, you know, experiential learning and from the very beginning itself? So इंटरेस्टिंग है द एनालॉजी, क्योंकि हमने शुरुआत में बात करने की शुरू की तब बताया कि यू आर नॉट फ्लोइंग विद द करंट. माई ग्रैंड मदर डिडंट फ्लो विद द करंट. शी न्यू दिस वॉज द राइट थिंग, सो शी स्टार्टेड इट इन 1947 with her sister-in-law Manorama Ben Sarabhai. They started this school in 1947. It has been with the same pedagogy, which was considered bizarre, क्योंकि that time it was Macaulay education system, you know, and same thing today
with the new education policy, which was announced, is exactly what they've been doing all these years. Wow. So suddenly people have realized that this is the way to do it, and not that Macaulay system. हाँ. And now the whole country is trying to move in that direction. So we are trying to create a Shreyas method. Okay, how does Shreyas work? So that others people can perhaps learn from it. There are other schools also. I'm not saying in Ahmedabad also there are some very good schools who are attempting to move away from this conventional Yeah. method. They are not affiliated to this CBSE or Gujarat or ICSE board. I mean, they have to be for the exam, but otherwise their curriculum is different. But I think more and more people are understanding. See, now you are a podcaster. Now, who would have imagined 5 years ago or 10 years ago that you choose that as a profession? Yeah. तो कौन सी शाला में आपको पढ़ाया पॉडकास्ट करो? नहीं पढ़ाया नहीं. True, yeah. तो अगर आपको मौका मिलता हाँ. स्कूल में ये करने का, और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती, और आपने तब से तय कर लिया होता, कब से तय कर लिया शायद होता, exactly. शायद क्योंकि आपने देखा होगा कि हाँ इसमें कंटेंट बन रहा है, लेकिन कंटेंट देगा कौन? हाँ. इतनी सारी चैनलें हैं, कंटेंट कहाँ होगा? तो अभी कंटेंट जो इतना बड़ा हो गया है, तो शायद वो पहले से मालूम था लोगों को 5-7 साल पहले कि अभी कंटेंट विल बी किंग, यू नो, एंड इट इज. So this is essentially that when you are ahead of your learning curve, House of MG was ahead, Darwin is ahead, our painting state of the art was ahead, Shreyas was ahead. So now what to do? Wow. And I I think don't mean it in a as an attitude. I mean, क्या है, but it is. नहीं, now that you say that, I'm just thinking कि आपके जितने भी projects अगर जैसे बोलो, तो whatever you're doing in whichever field, it's like already that first mover advantage वाला जो होता है, because you've done everything beforehand, like now you mentioned. नहीं, वो फर्स्ट मूवर सब टाइम एडवांटेज नहीं होता है. क्योंकि संघर्ष बहुत करना पड़ता है. I'm sure, और I'm sure. everything is not about business. Yeah. So education, for example, is about education. You Yeah. hope that more people come like that. हाँ. But it is about conviction. जो मैंने शुरुआत की थी कि अगर आपको conviction है तो फिर आसान है. तो फिर आसान है. तो ऐसा द्विधा नहीं होती है कि ये मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. ऐसा मुझे द्विधा नहीं होती है. पहले से नहीं होती. मुझे हाउस ऑफ एमजी में कभी द्विधा नहीं हुई, और शायद श्रेयस में पढ़ा इसलिए. वो द्विधा का जो सवाल होता है ना, वो बड़ा सवाल है, क्योंकि इन एवरीथिंग इन लाइफ यू आर द रिजल्ट एंड आउटकम ऑफ योर चॉइसेस. द चॉइसेस दैट यू मेड. True. You make your choices. You are the outcome of your choices. You can't complain unless somebody else has made your choices. Then it's a different matter. 100%. So if you have some conviction and you are able to make the choice, and if education provides you with a lens, education is supposed to provide you with a value-based lens. Literacy, numeracy ठीक है, Yeah. वो तो ऐसे भी आ जाएगी, लेकिन value-based lens through which you see the world, and in any choice that you have to make, you can determine shades of grey. True. If you are able to with that, and you choose the darker shade because you decided that I am going to choose this, then it becomes, because of your education and your conditioning, it becomes that much easier. 100%. But in everything, if you are saying नहीं मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, अगर वो ही सोच है तो आप शायद दूसरा कुछ सोचेंगे ही नहीं. I agree, because sir, and right now I think I'm at that stage. It took a lot of years, 28 years of my life to reach at this stage. But now वो जो आपने सही बात बोली कि मैं SRCC, which is like now Asia's #1 commerce college, I've graduated from that. But then what? I didn't know what to do. मेरा वो एक जो rat race होता है ना कि placement हो गया college से, I got a good corporate job. But that was not something I was supposed to do, I wanted to do. So it took me, I think, 10 years of work X also to understand that this is something now I wanted to do. So वो gap अगर मेरा education शायद schooling में ही fix हो जाता, where I would have done a lot of things that I thought like, you know, this is something that I want to do, तो I think बहुत बड़ा gap and बहुत सारे years save हो जाते हैं. That's like really good कि people are, I think, understanding this gap and they are moving towards it. And that's why, because I'm a sports person also, मैं हमेशा लोगों को ये बोलती हूँ कि कुछ भी करो अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर में डालो ही डालो, चाहे तुम कुछ भी करो. सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. सो आई वुड लाइक टू
थैंक यू ऑल्सो फॉर ब्रिंगिंग दैट एंड यू नो इतनी आगे तक आप इस सोच को लेके जा रहे हैं फॉर श्योर। एंड अगर आप मैं आपसे पूछूं सर, आर्ट और डिज़ाइन, बिकॉज यू हैव डन सो मच इन इट, आर्ट एंड डिज़ाइन, अगर कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन स्टूडेंट इज वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन क्या है, आप क्या बोलोगे उसके बारे में कि व्हाट एक आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए डिज़ाइन के पीछे? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि जैसे डेवलपमेंट का सवाल है, उसमें डिज़ाइन का तो बड़ा सवाल हो गया है। अभी हाँ। सब चीज़ में लोगों उस डिज़ाइन को अभी समझ रहे हैं कि ये मेरी जो जैकेट है उसका कॉलर थोड़ा यूं कर लेंगे तो नई डिज़ाइन हो जाएगी, यहाँ थोड़ी एम्ब्रॉयडरी कर देंगे तो डिज़ाइन हो जाएगी, इसको लोग डिज़ाइन बोलने लगे। लेकिन डिज़ाइन होती है ना, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है। अ डिज़ाइनर इज मेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इफ व्हाट यू डू गिव्स यू a solution to a problem, then you are a designer. Otherwise you are a just aesthetics. कुछ यूं कर लिया, कुछ यूं कर लिया, थोड़ी इयरिंग ऐसे बना दी, ऐसा कर लिया, टेबल का पाँव ऐसा कर लिया, कलर ऐसे कर लिया। वो सब इंटीरियर डिजाइनर्स नहीं होते, वो सिर्फ डेकोरेटर्स होते हैं। इंटीरियर डेकोरेटर बोल सकते हैं, इसको डिज़ाइनर नहीं बोल सकते। डिज़ाइनर क्या करेगा, उसको मालूम है कि अच्छा मैं ये हाइट पे स्विच लगाऊंगा, ये मुझे यहाँ मुझे पावर पॉइंट चाहिए और मुझे USB कॉर्ड चाहिए क्योंकि मुझे फ़ोन है। ये सब सोचेगा ना, ही इज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स दैट मोस्ट पीपल कैन। सो इन दिस होटल इफ यू फाइंड मोस्ट पीपल कम एंड से बट विदाउट वी वांटेड समथिंग एंड इट वाज देयर बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। डिज़ाइन is based on functionality, not on aesthetics. So, अपने एक एक चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको देख के कोशिश की है, लेकिन आपका सवाल था डिज़ाइन क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ डिज़ाइन इज टू बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एवरीथिंग एल्स इज डेकोरेशन। सो इफ यू आर अ डिज़ाइनर यू विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर द प्रॉब्लम टू सॉल्व। नाउ दिस अनफॉर्चुनेटली is very rarely the case. If you're an architect, you should be solving a problem. Of course, most architects के भी client को ये चाहिए, हमने वो ये बनाया, ठीक है, that is okay, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि उनको चाहिए। वो करके अगर आप देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये इनको प्रॉब्लम होगी। Makes sense because you are the professional, of course. हाँ, स्टीव जॉब्स ने क्या किया, उसने बटन निकाल दिया फ़ोन में से। अभी किसने सोचा था कि बटन वाला फ़ोन चलेगा, लेकिन उसने क्या बोला कि बटन की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बटन क्यों रखूँ। तो जो यूज़र को मालूम ही नहीं था कि मुझे बटन नहीं चाहिए, उसने बोला कि नहीं चाहिए, तो उसने बता दिया। तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट डिज़ाइनर। सो डिज़ाइन इज टू एंटिसिपेट एंड सॉल्व problems, which of course if you extend it makes the world a better place. So true. Makes your life a better life, makes the world a better place. अभी यूं वाली गाड़ी बनाए कि यूं वाली गाड़ी बनाए, क्या फर्क पड़ता है, you know? वो सब डेकोरेशन। इवन आई सॉ वन ऑफ योर TEDx टॉक ऑल्सो, जिसमें आपने रीडिफाइनिंग हेरिटेज इसके बात में भी बात करी है, बिकॉज आपको अक्सर हेरिटेज एंटरप्रेन्योर भी बोला जाता है। सो उस चीज़ के बारे में मैं एक बार आपसे वापस इधर जानना चाहूँगी सर। रीडिफाइनिंग हेरिटेज जो आपने वर्ड यूज़ किया है, व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली? क्योंकि सब वर्ड्स में बैगेज होता है। हेरिटेज वर्ड का बैगेज क्या है कि जो पुराना वो हेरिटेज। अरे ट्रू, पुराना क्यों हेरिटेज? हेरिटेज किसको बोलते हैं? जो आपने अनुभव की है, जिसने वो समय में कुछ बदलाव लाया है, या तो उसके बाद वो समय की एक इट्स अ सिंबल ऑफ दैट टाइम, यू नो। सो एंड इट बिकम्स ऑफ हेरिटेज वैल्यू बिकॉज इट इज यूनिक। सो पोल हाउसेज for example are a symbol of the time when it was fortified town and each house was so close together and the poles were close together, and to protect from the enemy the army would find it difficult to enter, and the houses were at a height and the narrow streets, narrow alleyways were there so the person could escape. All these were part of that kind of a culture, right? So our pole houses, this vernacular architecture with carving of block, all that is part of our heritage. But that is 300-year-old heritage, 200-year-old heritage. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज का हेरिटेज क्या होगा जो कल वाले लोग बोलेंगे कि ये हेरिटेज। wow, yeah. हेरिटेज थोड़ी बनने का बंद हो जाता है,
हेरिटेज तो चालू रहता है। ट्रू। तो या तो हमारा खाना, हमारी थाली है गुजराती थाली, तो गुजराती थाली तो सालों से हो रही है, लेकिन आज की 2024 की थाली कैसी होनी चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि आपको पुरानी थाली खिलाएंगे, हम बोलते हैं आज की थाली खिलाएं। वाओ। और आज का लाइफ स्टाइल, हम नहीं बोलते कि आप यहाँ आएंगे तो आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा और आपको ज़मीन पे बैठ के खाना पड़ेगा, कि आपको बाथरूम नहीं मिलेगी। हाँ। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो दिस इज adaptive reuse, it's not restoration. Yeah. So Very nice. our heritage keeps up with the times हाँ. and it moves, it doesn't remain static. अगर static होता तो हम जमीन पे बैठे होते। So true. This तो- is something to think about for तो sure. कुछ भी चीज़ में जो banyan tree होता है ना, हाँ. वो क्या होता है कि वो उसके मूलें बहुत नीचे जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जुड़ा हुआ है अपनी हेरिटेज से, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। तो हेरिटेज अपनी है, आपकी भाषा है, आपका खाना है, आपका रीति रिवाज है, आपका पहनवेश है, रिचुअल्स है, आपके, वो आपका आइडेंटिटी है। तो वो आपके रूट्स है, जिस रूट को लोग भूल जाते हैं, इसलिए ऐसे फ्लोट होते हैं। अगर आपके रूट स्ट्रांग है तो आप इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, ऊपर आप फैल सकते हैं वर्ड की तरह। तो वो फैलने के लिए आपके हेरिटेज को आपको जानना और आपको आइडेंटिटी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमने शायद हमें मौका मिला ये करने में, कि हमें हमारी हेरिटेज के अंदर जाना मौका मिला। हम पीछे गए, हम पीछे गए और अभी आगे आ रहे, क्योंकि हमने पीछे देखी और हमने इस्टेब्लिश किया। अभी हम कहीं भी घूम सकते हैं और हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारा रूट स्ट्रांग है। तो ये सबके लिए पॉसिबल है। दिस इज़ अ वेरी, आई मीन, इनोवेटिव थिंकिंग सर। मतलब दैट आपने ये चीज़ जो बोली बहुत ही सही है कि आज मैं अपना हेरिटेज बिल्ड कर रहा हूँ जो 300, मतलब फ्यूचर का सोच के कोई प्रेजेंट हेरिटेज बिल्ड करता ही नहीं है। इट्स लाइक वो विंटेज मोड ऑन कर दो एकदम, लिटरली 300 बैक जो लोग जाते हैं। आई थिंक दैट्स द आइडियोलॉजी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलोइंग। सो हाँ, तो अभी हमने हमारे एक टॉक में आज बताया कि हेरिटेज माने नहीं कि आप पुरानी सिटी जाओ। हाँ। अब बक्की आओ, वो नया हेरिटेज है। वो बक्की को 20 साल के बाद बोलेंगे कि हाँ ये कुछ हुआ, ये तो अपना हेरिटेज है। जैसे कोर्बुजिए को बोलते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ कि हमारा ऐसा है, मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन कोर्बुजिए को क्यों हेरिटेज बोलते हैं? या तो लुई कान जिसने आईएम बनाए, इसको क्यों हेरिटेज बोलते हैं? क्योंकि अलग था उसके वो समय के लिए। तो ऐसे बक्की एक अलग विचार है। और अगर ज़्यादा लोग कोशिश करें कि वो आज का हेरिटेज बनाए, तो कल का फ्यूचर कितना स्ट्रांग हो जाएगा। अभी तो लोग पुराने हेरिटेज को बचाने में पड़े हैं और उसको भी नहीं कर सकते। उसके तो अच्छा है कि वो आज का हेरिटेज बनाने में पड़े, कल का हेरिटेज बनाने में आज पड़े, तो कल के लिए हो जाएगा। that's the future innovation। और अपना अभी आज का हेरिटेज क्या है? मल्टी स्टोरी ग्लास बिल्डिंग और एक डब्बा वाली गाड़ी। अपना कुछ हेरिटेज बचाएं। कुछ आप बोलो, आपको एक भी चीज़ दिमाग में आती है जो आप बोल सके कि ये कल का हेरिटेज अहमदाबाद का रहेगा। ये कल लोग याद करेंगे कि हाँ ऐसा कुछ अहमदाबाद ने किया जो अजीब था, जो पहले नहीं हुआ। ऐसा थ्रेशोल्ड ब्रेक थ्रू डिज़ाइन में कि कोई भी चीज़ में अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम हो रहा है शायद। आई वॉन्ट टू आस्क यू सर, और आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत, मतलब ऐसा होता है ना, साइमल्टेनियसली लोगों को और हर चीज़ को साथ लेके चलती है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिल्ड। अगर मैं आपसे पूछूँ हाउ स्पिरिचुअली आर यू इंक्लाइंड, मैं आपसे आपसे जानना चाहती हूँ वो आपका एक इंसान कितना स्पिरिचुअल है, एंड हाउ मच डू यू थिंक अबाउट लाइफ, बिकॉज यू थिंक एट सच अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव अबाउट एवरीथिंग, अबाउट योर वर्क, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर फैमिली। सो मैं एक वो फेस भी आपका जानना चाहती हूँ। आर यू अ स्पिरिचुअल पर्सन? Anybody who says he's not spiritual doesn't know himself. What is spirituality for you, if I ask? Spirituality is a journey within. It's not outside. And a journey within is possible if you're with yourself. So if you spend a lot of time with yourself and you understand yourself and your true self, your flaws, your strengths,
and you are able to accept those and not take things too seriously, because it's just you live and you die, you know? Yeah. These kind of things you accept because you understand that it's just eventually doesn't matter. So while you live, try and understand yourself as much as possible and live with certain convictions. I think that itself is spiritual. It's nothing about religion. It's about knowing yourself. Spirituality is about knowing yourself. Yeah, makes sense. And थोड़ा सा गैर मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं एकदम पहचान, लेकिन मैं काफ़ी पहचानता हूँ अपने आप को। एकदम तो अभी थोड़ी देर है। पर आपने अगर सर इसमें जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करी, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट्स योर वन स्ट्रेंथ दैट यू आर रियली प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आप क्या बोलोगे? मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन. सो आई थिंक स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन and not having a dvida about what I want to do is a strength. It has I have many weaknesses about exactly how to do it. Sometimes is a question, but what to do is not a question. So at least knowing what to do is a big thing. How to do, there are some cases which I figure I should have done it like this or I should have done it like this. That's a learning curve. And because you keep doing something new all the time, which I like to do. I like to do things which nobody has done. That is my driving force. That's so good. So if I am trying to do something which nobody has done, then I don't know how to do it myself. I make a lot of mistakes. And if I make a lot of mistakes, then you say, I should have thought of this. So maybe I could have done it like this. So I think my strength is knowing what I want to do. Wow, I've done so much wow in this episode. I feel एक चीज़ और मैं आपसे, because you have such amazing restaurants, तो मैं थोड़ा वो भी चाहती हूँ लोग आपसे सीखें. तो अगाशे है, ग्रीन हाउस है, सो रेस्टोरेंट अगर, बिकॉज आई थिंक ये ऑलमोस्ट हर इंसान का एक सॉर्ट ऑफ सपना होता है कि मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट अपने लाइफ में खोलना चाहता हूँ. दैट्स समथिंग दैट आई थिंक एवरी अदर पर्सन वॉन्ट्स. वो रिटायर वाली लाइफ होती है ना उसमें. एंड यू हैव बिन रनिंग सच अमेजिंग रेस्टोरेंट्स इन सो लॉन्ग. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक इंसान को रेस्टोरेंट ओपन करना हो, व्हाट आर द 3 टॉप थिंग्स, अगर मैं आपसे पूछूं, जो इट्स लाइक अ येस येस और अ नो नो फॉर यू, कि ये तो करना ही चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? आपको रेस्टोरेंट क्यों खोलना है वो सबसे पहले सोचना चाहिए. पैसा बनाने के लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो मत खोलना. और आपको खाने में बहुत शौक है इसलिए खोलना है तो जरूर खोलो. खिलाने में शौक है तो खोलो. लेकिन रेस्टोरेंट चलाने के लिए पैशन की बहुत ज़रूरत होती है. पैशन ऑफ, व्हाट आई मीन बाय पैशन इज़ नॉट दैट यू आर पैशनेट फूडी, विच आई एम नॉट, बट passionate about whatever you do. And I'm passionate about serving food that I believe in. So Agashe served the same food for 25th anniversary. Greenhouse 25th anniversary in October. So they've served the same kind of food for 25 years. What does it mean? We haven't gone to, we've not become confused like Indian continental, Chinese, Japanese, whatever, you know. Every restaurant is multi-cuisine. We are not multi-cuisine. We offer certain things, but we are comfort food. So if you have a conviction, when I say passion, you can say, I really like महाराष्ट्रन खाना और मैं महाराष्ट्रन खाने की रेस्टोरेंट बनाऊंगा. ऐसा अगर आपको मालूम है तो बनाओ, तो अच्छा करेंगे. लेकिन आपको नहीं मालूम है, मैं शायद ऐसी भी ये चलती है अभी, ये अभी ऐसी रेस्टोरेंट चलती है तो मैं ऐसा करूँ, बर्गर चालू कर दूँ तो नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा. सो यू मस्ट रियली हैव अ पैशन एंड कन्विक्शन अबाउट why you want to run a restaurant in the first place, and if you do want to, then what will sustain your interest over a long term of time, even if it doesn't make money. Right. और शेफ और स्टाफ, मतलब एज इन द स्टाफ, द कुक, द शेफ एंड एवरीथिंग, उनका आपको क्या लगता है कि कितना रोल रहता है? अरे सबसे बड़ा रोल है. स्टाफ के बिना कुछ नहीं हो सकता है. तो आपके जो गुजरात का एक है कि ऐसे लॉन्ग टर्म वो ही लोग हैं, जनरली होता है ना. स्टाफ हमारा फैमिली है. फैमिली. हाँ, स्टाफ इज द मेन इन सर्विस, एनी सर्विस बिजनेस, because nothing is robotic here. Everything is done by the staff, you know. From picking what food
to cooking, how you cook, to serving, treating the guest, everything depends on the staff, you know. You just set the rules, but it is executed by the team. And team is all important. Nothing can be done without a team. So if you have a team which you can enthuse with your value system, because the Yeah. business is about values, Yeah. and they align with your value system, and if you feel they feel proud of being somewhere, then you have mostly won the battle, because your team believes in what you do, Yeah. and they will be with you. Exactly. But that is also a challenge. I'm sure वो No, it's not a challenge if you are able to recognize the best in every person. But for that, the time you have to spend with every person, because nobody is a bad person. उनको सर फैमिली फील कराने का ही मेन जॉब होता है. दैट्स द होल पॉइंट. वो और that whole HR thing is a whole learning curve. वो चलता रहता है, लेकिन जैसे मैंने बताया, क्या है मालूम है, कैसे करना सीख रहे हैं. हाँ, ट्रू दैट. एक आखिरी सवाल सर. यूं ही शिल्पकार नहीं बनते, जो हमारी ये सीरीज है, और आप इतने बड़े शिल्पकार हैं, मैं तो ये बोलूँगी. तो अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ में, वो किसी भी फील्ड में है, और उस फील्ड में वो शिल्पकार बनना चाहता है, उस फील्ड में वो सक्सेस पाना चाहता है, क्या बोलोगे आप उसके लिए? क्या कैसे वो अचीव कर सकता है वो चीज़? सबका सवाल के जवाब एक ही है. अपने आप को जानो. अपने आप को जानो. अगर अपने आप को जानते हैं तो आपके पास क्लैरिटी मिल जाती है. अगर क्लैरिटी है तो सब आसान हो जाता है. प्रॉब्लम्स कब होते हैं? जब कंफ्यूजन होता है. दैट्स द होल पॉइंट. तो और जो शिल्पकार आपने सवाल जो यूज़ किया, क्रिएटिव इज अ क्रिएटिव पर्सन. तो क्रिएटिविटी इज इन ऑल ऑफ अस, बट आवर एजुकेशन इज डिजाइन टू किल आवर क्रिएटिविटी, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज यू आर सपोज टू डू इट इन अ सर्टन वे. आपका आर्ट टीचर क्या बोलेगा कि नहीं, ऐसे नहीं दो सकते, अभी दैट इज किलिंग क्रिएटिविटी. यू कैन ड्रॉ एनी हाउ यू लाइक, यू नो. But our education system is designed for you to conform to a particular type which has to change. So a Shilpkar can't be like a particular type. He has to be individualistic. Wow. Of course, you may argue that all crafts are group, you know, but that is parampara. लेकिन परंपरा में भी जो शिल्पकार होते हैं, वो अगर आपने ये जो अपने पीछे पढ़ा है, वो म्यूजिशियन, आपको वो नॉर्मल अच्छा है, लेकिन आप में इसमें कुछ अगर खास दिखे, वो जो दूसरे में से अलग है, तो वो शिल्पकार होता है. ये भी शिल्पकार है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शिल्पकार है. ये अच्छा शिल्पकार है, लेकिन शायद इतना डिफरेंशिएटर नहीं है. तो मुझे लगता है कि सबका सोच और एम्बिशन होता है कि मैं अलग सा एक खास शिल्पकार बनूं, जिससे मेरी जो भी कला है उसका मैं ऐसे उपयोग करूं, जिससे जो मैं जो भी बनाऊं वो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करे, कुछ ऐसी ब्यूटी लाए जो पहले नहीं थी, जिससे कोई की लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस आ सके. तो वो सही में शिल्पकार में बोलता हूँ. वाह सर, और कोशिश करता हूँ कि हम भी बने ऐसे. मैं वही बोलना चाहती सर, आपकी बातें इतनी इंस्पायरिंग है. मतलब एक होता है ना, एक आइडियोलॉजी है, और उसको सोच के तुम्हारे बहुत सारे से थॉट्स ओपन अप हो जाते हैं. लाइक होता है ना, तुम्हें, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू फ्लैटर यू एनीथिंग, इट्स जस्ट आई एम फीलिंग दिस है कि आपकी आइडियोलॉजी इतनी सिंपल है, गेट इतनी क्रिएटिव है कि वो अगर आप अपनी लाइफ में तुम प्रॉब्ली यू टेक इट अहेड, सो you can win at least you can get some answers. Thank you so much, sir. Thank you. Amazing conversation. Lovely talking with you. Same here, sir. Thank you so much.